Hello students, you all are welcome in grade 8 subject maths. Today's topic exercise 11.2 continue. So please open page number 176 where example number 1 we are going to see. In example number 1, the area of trapezium shaped field is 480 meters square. The distance between two parallel sides is 15 meter and one parallel side is 20 meter. Find the other parallel sides. Means area of trapezium is equal to half of h into a plus b. Let a be the one side, parallel side, and b is the other side. We have to find out one of the parallel side, right? Area is given and distance between them is given. Distance between them is 15 meter. Okay. So you can find out like this way. Here you see trapezium, distance between them 15 meter, A is 20 meter, B that we are going to find out. Here I have written total area is given 480 square meter, value of A is given, B we are going to find out. So put the formula as per our listed. Area of trapezium is equal to half of H into sum of two parallel sides. Area 480, half, distance 15, 20 plus B. Okay, one of the side that we have considered B. So one of the side that is A is 20. So now simplify this 4, this division it becomes multiplication when it transferred to this side. Then 15 multiplication when it transferred to this side becomes division. Okay. So now 15 32 is 480. We simplify this, you will get this value 64 20 plus b. So b is equal to 64 minus 20. We will get 44 meters. So the length of one of the side of the trapezium is 44 meter. Like this way you can find out. Now transfer to example number 2. The area of rhombus is 240 centimeters square. One of the diagonal is 16 centimeter. Then find the other diagonal. So we know the area of rhombus, half of d1 into d2. So let the first diagonal say d1 is equal to 16 centimeter, other is say d2. Put the formula, area of rhombus is equal to half of d1 into d2. Okay, then half of 16 into d2 is equal to 240. You transfer this, 2 comes to this side like this. Here you can see 240, half of 16 into d2, 240 goes to this side, becomes division, becomes multiple, and multiply become division over here. Then you simplify, you will get the value d2 is equal to 30 centimeter. Now example number 3. Here there is a hexagon MNOPQR of side 5 centimeter, regular hexagon, from figure 11.20. Now Aman Riddhima divided it into different ways. Means अमन अलग वे से काउंट कर रहा है और रिद्धिमा अलग वे से काउंट कर रही है. फिगर मेन हमारा ये है, बराबर 11.20. वहां देखो ईच साइड लेंथ इज 5, ये पूरा 8 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां का 11 और ये पूरा 11, ये लेंथ, करेक्ट. तो अभी देखो when we solve according to Riddhima's method, बराबर, तो अभी ये you just mind well this figure and its measurement, and this figure how can we count, let's you see. So first of all I am just drawing this diagram. According to Riddhima's method, 1, 2 and 3 figures, if it is divided like this way, then 2 figure geometrical figure form. Triangle, this is also triangle and this is rectangle. Now dear students, here the total length from here to here is 11. Now this is 5. So 11 minus 6 means 11 minus 5 means 6. Okay, so this is 3 and this is 3 because this is regular hexagonal. Okay, तो ये मिल गया. क्योंकि ऐसा क्यों मैंने ये 3 ढूंढा, बिकॉज दिस इज ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड. तो बेस तो है, देखो ये 8,
तो अभी हाइट यहाँ से यहाँ की कितनी होगी 3, तो ये भी 3, यानी कि आप देखो ये भी 8 है, तो दो ट्राइंगल्स इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि एक का एरिया ढूंढो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो गया। अभी बचा ये, नाउ दिस इज रेक्टेंगल हैविंग द लेंथ इज, रेक्टेंगल में लेंथ चाहिए और ब्रेथ, इट इज गिवन 8 and 5, so area of total hexagonal is equal to, so area of total hexagonal is equal to area of two triangles plus area of rectangle. Okay, like this way we divide, then we will get this solution. So area of one triangle is equal to half of BH, half of 8 into 3, you will get 12 centimeter. But we have two triangles, area of 1 and 3, so it becomes 12 plus 12, 24 हो गया. Now area of rectangle, L multiplied by B, 8 5 are 40. So area of total hexagonal is equal to this 40 plus 24, that is equal to 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ हेक्सागोनल कैसे बना, दो ट्राइंगल और वन रेक्टेंगल, इट इज अकॉर्डिंग टू रिद्धिमा's मेथड, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, लेट्स वी सी अमन्स मेथड. अभी अमन भाई ने क्या कर दिया, ये जो हेक्सागोनल है उसको एग्जैक्टली डिवाइड, इट डिवाइड्स फ्रॉम हियर, यू सी. तो ये कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बन गया बच्चों, इट इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम नंबर 1, ट्रेपेजियम नंबर 2. तो ट्रेपेजियम के एरिया आप ले लो, और ये देखो ये दोनों ट्रेपेजियम इक्वल है, तो आप एक का ढूंढो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो एरिया ऑफ वन ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ट्रेपेजियम फॉर्मूला वी नो, h इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ ऑफ हाइट कितना है, देखो ये हाइट है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 8 है तो एग्जैक्टली ये 4 हुआ, और दिस इज एक का ये 11 है और ये 5 है, तो 11 प्लस 5, सो हाफ ऑफ 4 प्लस 16, तो 11 प्लस 6 5, दैट इज 16, so 2 8 जा 16, so 8 4 जा 32 centimeter square. But now here area of 1 equal to area of 2, so area of hexagon is equal to area of 1 plus area of 2, 32 that is 64 centimeter square. So now I am telling you students which one is easy one. This Aman's method is easy one, बराबर. उसमें आपको दो ट्राइंगल का प्लस वन रेक्टेंगल का ढूंढना था, यहाँ एक ही को ढूंढना है, और दो स्टेप में यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ आपका 3 स्टेप लगता है, राइट. लेकिन आपको जो जमता है वो आप करो, राइट. वॉट एवर द प्रॉब्लम दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजी वे, अकॉर्डिंग टू दैट वे यू हैव टू डू. ओके. Okay, question number 7. The floor of the building consists of 3000 tiles and that tiles are having the shape rhombus. तो rhombus में आपको क्या चाहिए, D1 D2 डायगोनल्स दिए हैं. Find the total cost of polishing the floor. तो आप क्या करो, एक टाइल्स का एरिया ढूंढ लो और एरिया दैट इज इन द शेप ऑफ rhombus, बराबर. So this is the solution, rhombus shape tiles, D1 D2 दिया है, एरिया ऑफ वन रोम्बस टाइल इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 इंटू D2. देखो ये फॉर्मूला का ही खजाना है, फॉर्मूला रख दोगे आपका काम हो जाएगा. 2 इंटू 45 इंटू दिस 30, 2 15 30, 45 15 you will get 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ वन रोम्बस. अपने पास कितनी है टोटल 3000 टाइल्स, तो 675 मल्टीप्लाई बाय 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन आप देखो यहाँ मैंने मीटर में कन्वर्ट क्यों किया, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डिवाइड करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर, सो यू हैव टू डिवाइड, यू विल गेट दिस 2025 अपॉन 10, दैट इज 202.5 मीटर स्क्वायर. क्यों, बिकॉज द कॉस्ट इज गिवन इन मीटर स्क्वायर. अब देखो कॉस्ट क्या दिया है, आप देखो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं. दैट्स व्हाई आई एम कन्वर्टिंग दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर स्क्वायर. सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रुपीज, देयरफॉर 202.5 meter square is equal to how many, you will get this, when you multiply this you will get 810 rupees. Move to question number 8. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to the twice side of the along the road. यानी कि वो मोहन का जो एक फील्ड है, ही वॉन्ट्स टू बाई द फील्ड, लेकिन फील्ड कहाँ है, एक बाजू पे रोड लगता है, दूसरी बाजू पे रिवर लगती है, राइट. और क्या है, द कंडीशन इज देयर,
its side along the river is parallel to and twice the side along the road. यानी कि सपोज रोड का लेंथ और ये लेंथ दिया नहीं है, राइट, तो हम कंसिडर करना पड़ेगा. लेट द रोड साइड बी x, तो ये जो साइड है रिवर वाली साइड, दैट विल बी 2l होगा. दिस साइड इज सपोज l, this is given in meter. Okay, so l meter, so this will be 2l, because ये along the river जो length है that will be double than the road, and the distance between them is 100 meter. Okay, so let's we find out this. So here the trapezium field is this, one side road is there, other is river is there, distance between them is 100 meter. So let the length of the field along the road side is L meter. So now the length of the river side is double, means वो कितना होगा, river side of the length is 2L होगा. Now distance between them 100 meter. So area is given 10,500 meter square, it is given in the question. Now area of trapezium is equal to half of h into sum of parallel sides. Formula लगा दो, value रख दो. ये 10,500 1 upon 2 100 L plus 2L, ये 2 इधर जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, L plus 2L यानी 3L हो जाएगा. Now you see 10,500 is equal to 1 upon 2 100 into 3L. 2 goes to this side and 100 will be this side. 2020 cut, you will get 3L is equal to 105 into 2. बराबर. Now L is equal to ये 3 multiplied, when it goes to this side becomes divided, right? So 3 35 are 105 and 35 to the 70 meters. So L is equal to 70 meter. We have to find out in our question that find the length of the side along the river side. So along the river side 2L hai. So 2 into L, 70 into 2, that is 140 meter. So the length along the river side is 140 meter and length along the road side is 70 meter. Okay, so here this problem is over. Like this way students, you read each problem and do homework question number 9, 10 and 11. Okay, so till here we do this. So have a nice day. Thank you. And next time we will start surface area and volume in next period. Okay, this chapter is long. Okay, so it requires still 1 week for that. Okay, so every day in every period we will do one that chapter. Okay, so thank you. If you have any problem you can ask me, you can call me. Thank you.